What's up boys? YAORCB. मुझे आता नहीं है पूरा लेके आज गाना बजेगा ना स्टार्ट में। What's up? आज What's बजाना up होगा boys? गाना। आज अरे तो गाना पार्टी। बजाना दिल्ली के लौंडे। मैं दिल्ली का बजाऊंगा, तू आरसीबी का बजा। RCB. Play bold, boys. Play bold. बस That's how you play bold. Not one, two, three. This is the fourth victory on trot for us. देखो पता है उतना ही मजा आएगा जब हारने का सिलसिला चालू होगा। अरे देखते हैं ना भाई, तब की तब देखा करेंगे। हमने कब फ्यूचर का सोचा है? वो दिल्ली की बात कर रहे हैं, एक हार चुके हैं ना। चुके कोई नहीं उनको आदत है ऐसे। आदत बात तो ऐसी कर रहे हो जैसे कि 5 आईपीएल जीत के तुम लोग बैठे हो। 5 आईपीएल वाली टीम तो तेरी भी नहीं है। हमारे तो हार के भी चर्चे थे, इस बार जीत के होंगे। हार के भी हम ही चर्चे में रहते थे। चर्चे तो हम करते थे। देखो हमारी टीम तो 2 साल पहले ही बनी है, ठीक है। अभी ये तू नहीं, अभी तू ऐसा नहीं कर सकता। इट्स दिल्ली। टीम देखोगे तो हमारी भी इसी साल बनी है। इसके पहले सिर्फ स्टार्स ही हुआ करती थी। टीम तो इसी साल बनी है हमारी भी। नहीं मतलब टीम तो बनी है, बट हमारा ही तो फ्रेंचाइज, हमारा तो ओनरशिप चेंज हुई है ना। हमारी तो यूजलेस ओनरशिप थी। टेक्निकलिटीज पे मत जा। टेक्निकलिटीज पे मत जा। नहीं ओनर्स नहीं बदले, बट 50% स्टेक डाइल्यूट हुआ है ना उसको। टेक्निकलिटीज पे मत जा तू अभी। तू बस यस आरसीबी को सेलिब्रेट करने के बारे में। आज तो भाई सेलिब्रेट करना ही है आरसीबी को, और उससे ज्यादा वील सेलिब्रेट अ यंग प्लेयर who we all love so much and we see so much potential in him. करते हैं बात, we'll discuss today's game. विकास स्टार्ट करते हैं, पहली इनिंग से स्टार्ट करते हैं। yes, absolutely. कुछ एकदम पहली इनिंग से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करते साथ ही सिराज की बात चालू करनी पड़ेगी। लास्ट मैच में हमने सिराज की बहुत तारीफ की थी, और आई थिंक हम लोग फ्लूक नहीं कर रहे हैं। वो सिराज इज नाउ एक्चुअली टर्निंग इनटू अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। और यार वो जो डेविड मिलर को उसने एलबीडब्ल्यू किया है, वाह 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 ऐसा हो गया ना। that was too good. Even Josh Butler का bold also, you know, it was just Josh Butler is a class batsman. He's a class batsman, but I think he got beaten for pace and a little bit of bounce, and that is what Siraj brings with his high arm action and his, you know, quick action as well. So yeah, it was so good today. Anything on सिराज you want to add जो हमने पहले नहीं बात की हुई है सिराज के बारे में? सिराज मेरे लिए स्किल लेवल पे मतलब राइट अप देयर विद द वेरी बेस्ट। अगर कॉन्टेम्पररी लॉट ऑफ बॉलर्स देखो, अगर हम आर्चर, बुमराह, इन सब की बात करें तो इन लोग स्पेशली T20s और लिमिटेड ओवर्स में नकल बॉल, स्लोअर बॉल, वेराइटी ऑफ ये, बट यू हार्डली एवर सी सिराज रिजॉर्टिंग टू ऑल दोस काइंड ऑफ डिलीवरीज। इवन एट द डेथ, मतलब जब वो आंड्रे रसल को रोक रहा था, इट वाज हाई पेस, हाई 140s, you know, low high 130s को टच करके he was using the seam. Very worthy successor, maybe calling it very early, but worthy successor to someone who donned the RCB jersey, Dale Steyn. Mohammad Siraj, very early, calling it very early, but that guy has a lot of potential. But Dale was not that great of a player for RCB, na? Dale was like an overall legend. नहीं था, but you know, he was someone who relied mostly on pace. मतलब hardly you would ever see Dale Steyn bowling those cutters. Maybe that brought his downfall as well. He could not adapt. But you know, Siraj is using his strength to the hilt, and that Australia series has changed him, man, and changed him for the good. I mean, man, just he's now a man. Or Kohli wants to turn to somebody now. और एक और चीज विकास, I mean this is good captaincy from Kohli as well. Kohli is using Siraj with you know, according to his strengths. He's bowling him in the early overs now, right? Because obviously एक और बंदा मिल गया तुमको डेथ में बॉलिंग करने के लिए अच्छा. What I loved about Siraj is like there are some intangible things which you cannot see. I mean like Vignesh said कि भाई he doesn't bowl many variations and everything, but that sheer confidence of you know saying that I am here,
I'm Correct. here. I'm a Indian Test player, and that Correct. confidence on his face on that in his early bowling. मतलब मेरे को लगता है उसने जो वृद्धिमान साहब को लास्ट मैच में एक जो पहला बॉल डाला तो जो एबी को बीट करवा दिया और ये भी हुआ. सेम टुडे हैपेंड विद बटलर एज वेल. एबी को बीट नहीं करवा पाया, बट दैट बॉल अगेन, लाइक the initial spell was amazing. Also, you know, Jamieson coming to the other end and bowling some very good really bowling well. Yeah, Jamieson bowled well as well. Yeah. Jamieson has been a great foil for you know all the bowlers. इस साल है ना, मतलब एक एंड वो अच्छे से सपोर्ट करता है. एक मेजर चेंज जो मुझे आरसीबी के बॉलिंग में इस बार दिख रही है ना, बीइंग एन आरसीबी फैन या फिर मतलब ऑब्जर्विंग आरसीबी क्लोजली, तो जैसे ही 12-13 ओवर हो जाने लगते थे, अर्लियर हम लोग को डर लगता था यार कि अभी इस बॉलर को हमें छिपाना पड़ेगा या फिर ये बॉलर पिट ना जाए. बट अब कोई भी मतलब डेथ पे भी आता है. हर्षल पटेल इवन तो ही वेंट फॉर रन्स बट कोहली स्टिल बैक्ड हिम. और वो जो 19th ओवर के लास्ट बॉल पे और 20th ओवर के फर्स्ट बॉल पे तेवटिया और मॉरिस को आउट करना, इट स्टिल मेड अ डिफरेंस ऑफ 10 to 15 रन्स इजीली. एंड दैट इज अ ह्यूज वो अभी वो 180 200 हो जाता है तो साइकोलॉजिकली आपको यू नो जस्ट कम एंड हिट हो जाता है ना, देन यू कैन लूज अ कपल ऑफ विकेट्स. ऑफ कोर्स ऑल दोस मोमेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट. जस्ट वांट टू स्ट्रेस गाइस, आई मीन ऑफ कोर्स अ ग्रेट विक्ट्री, बट बॉलिंग वाइज आरसीबी की स्पिनर्स आर स्ट्रगलिंग हियर. Washi and Chahal both, even in Chennai, मतलब the conditions that favored them, तब भी वो struggle कर रहे थे. And of course यहाँ पे तो करते ही. I am seeing that weakness. अभी अगर कोई weakness अगर मैं देखूँ, you know, they've won 4 games in a row. So I think that is a little bit of a weakness. I think I can see there. Yeah. Actually, Shashank, I was telling this before as well. Yuzi is not in his like prime form, which he had for RCB as well. He used to be a go-to bowler for Virat. क्योंकि मतलब अगर RCB से कोई विकेट ले रहा है तो ऐसा लगता था कि अगर चहल आता है तो विकेट ले रहा है. But I don't see really a big problem there because हम technically we are still playing with 3 overseas, right? I mean, Kane Richardson didn't really made a lot of difference. Daniel Christian tha. But I think we have Adam Zampa in our squad that if we need a better spinner, I think we can use he's not an well. option in Wankhede, na. Wankhede mein to option he's not a Wankhede option for sure, but I mean there are very few who can bowl in Wankhede. You need to have like someone like Rahul. When we move to Delhi for 4 games, then Zampa will be a handy option here. Then I think Delhi mein the pitch will suit him. Yeah. वो कर सकते हैं वो लोग. But yeah, do you guys think Virat is going to continue with Yuzi? Yeah, change, you know, yeah, हटाएगा because option नहीं है. I think Yuzi will play at least like, I mean, he's going to play half of the season for sure. और अगर उसमें बहुत ज़्यादा ही खराब होता है तो he'll look for other options. Otherwise, I don't think he's dropping. मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है क्योंकि I think that is his trusted lieutenant, right? मतलब he has trusted him so many times. Chinnaswamy जब वो छक्के भी खाता था, Virat used to give him the ball and he used to flight it as well. I think he's just, I really like him, man. I just don't want to count Yuzvendra Singh, Yuzvendra Chahal out just yet, you know. थोड़ा bad form में है, I mean, you know, but है तो chess player. तो chess player आएगा शायद अगले 2-3 मूव्स के बारे में सोच रहा होगा. This guy, bro, Harshal, 3 wickets again. मतलब चिपक गया है वो पर्पल के आपके साथ. नहीं वो छोड़, उसको छोड़ना नहीं है भाई. 47 दिए उसने आज. He was a bit expensive, but you know, आखिरी में भी bowling कराता है. You know, when he comes on, the players, I mean, the team is going for it. एक start है यार हर्षल के बारे में. Most wickets in the first 50 IPL innings. Harshal की 50 हो गई है. And among Indians this is. Harshal is right now in 1, 2, 3, 4, 5, 6th place. And like who are the big 5 names? Harshal के नीचे एक नाम है. He's not a big name. His name is Jaydev Unadkat. But I think that was basically the. I think he played like one inning in after like 4-5 matches. I think he didn't play today as well. ऐसा भी हो सकता है. हाँ, I think वही होगा. So Unadkat is 58. Harshal is 58 now. Mohit Sharma is 60 wickets. Sandeep is 61. Munaf is 65.
Oh. Amit Mishra is 66 in first 50 IPL, and joint top with him is Yuzvendra Chahal with 66 as well. Nice. So surprisingly, a lot of RCB bowlers, like 2 RCB bowlers. ना बुमराह है, ना अश्विन है, ना भुवी है. हाँ यार, I mean, this is a strange टॉप start. इंडियन T20 बॉलर्स नहीं है उसमें. सरप्राइज. करें बैटिंग पे बात. इनकी बॉल बैटिंग तो ऐसे ही थी, बाकी there was nothing there. I mean, yeah, of course there was Lord. Lord played a great innings again. Lord But again was was a Lord, yeah, Lord. Shivam Dube pleasantly surprise किया यार मुझे. मतलब I have never been a fan of Shivam Dube. I आज will still मतलब not be. True. आज मतलब given the circumstances, he attacked well. मतलब he chose the right resources to he attack. chose the right thing. वो Short जो ball अभी पे, last innings में आके कर रहा था, he was just Right. knocking the ball around, not able to get it around, not able to rotate the strike also. आज उसने at least वो तो Right. किया है. I mean, he was hitting and he was Correct. rotating the strike also. Yeah, otherwise there is nothing much to talk about here. Everybody just Sanju again, just being Sanju, 21 of 18, looked good. Just got out to another like क्या है वो? I mean, cotton ball. Exactly. I mean, Cotton again, ball it's नहीं, but yeah, एक like मैं mid wicket पे catch किया, Disappointing. but mid-wicket. that Okay, was like sorry. so Yeah, I stupid, so forgot. stupid. I was just remembering Prithvi Shaw as well. I just Prithvi see Shaw, the both yeah. both of these guys have a similar trajectory. Same ना, hard hands again, Messi type का shot, just giving Yeah. it to the. I mean, Too early. Commit कर दिया उसने shot. हाँ, वो यार उसके साथ स्टीव स्मिथ वाला केस हो जाता है. I mean, not to हाँ. compare him to Steve Smith, but brain fade हो जाता है इसके साथ भी. Yeah. Yeah. आज इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ा. Yeah. Let's go. Let's come to the batting. The king is back. The king is back. Love it, bhai. Love it. When Virat scores now, there's nothing better than that. Yeah. थोड़ा struggle कर रहा था starting में, when Padikkal sort of took the initiative, but Virat came into his own बाद में. And So, Padikkal was reaching his 100. yeah. Virat took over basically. Yeah, Virat took over. I so want to हमने मुझे एक थोड़ा सा सिनेरियो And यहाँ पर Vignesh, डिस्कस करना है. Who the fuck is Shreyas Gopal bhai? I agree वो stat है. कौन? I agree वो stat है, but वो संदीप के शर्मा के साथ भी समझ में आता है. मतलब अच्छे बॉलर्स के समझ. मेरे को तो वो स्टार्ट सही में आज के पहले मुझे नहीं पता था जो स्टार्ट. Frankly speaking, I did not know this. कि 4 बार एबी को आउट किया है, 3 बार कोहली को किया है. I didn't know this, frankly. Anyway, sorry. नहीं, continue. नहीं, I guess last inning जो RR के साथ खेला था last IPL में भी, उसमें भी scored some 72 runs and 58 some 58 balls. So yeah, हाँ, जो मुझे अभी majorly discuss या फिर मतलब mention करना था ना. So I'll compare just 2 innings, 2 opening partnerships here. So one was Mayank and KL. And this Padikkal and Kohli. I just want to differentiate क्या था इसमें. When Mayank got out, he was 33 balls, some 64, 66. He was striking with 200 and everything. Yeah. And at the same time, KL was playing 40 balls. Okay. He played more balls than Mayank when Mayank got out. Yeah. Exactly. Yeah. And when I think Padikkal was playing some 30-40 balls and scoring some 80, he was in 80s, I guess 37, 80. And on that time, I think Virat was 28 ball 33. Something like that. Yeah. 28 ball 33. His first, and then I think this is one thing that if you're not striking hard, you have to give strike to someone who is hard, who's playing better. Yeah, exactly. Who's playing better. And then the second part is Virat's first 25 balls strike rate was somewhere around 104, 105. In Virat's strike rate was 244. I think that acceleration is a difference between KL and Virat, or KL or someone else as well. So I think वो जो acceleration है once Virat is in zone. Again, because I mean I agree भाई जो तू बोल रहा है, and we've discussed this about KL, but मेरे को again KL के साथ वही लगता है. There's no batting नीचे यार. अभी वो they will completely collapse यार उसके बाद. मैं I agree जो तू बोल रहा है, completely agree कि वो conservatively खेल रहा है. वो अभी से नहीं, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं KL को, 2 साल से तो एटलीस्ट देख रहे हैं कि conservatively खेलता है वो बहुत. Vignesh, any opinions about this? जो विकास ने बोला बैटिंग ओपनिंग का डिफरेंस KL का.
नहीं, उस दिन भी विकास भाई had mentioned a very nice point कि मतलब as soon as Kohli understands कि there is someone batting better than him, he tries to give him as much as strike as possible. We have seen this with Kohli Rohit, Kohli Gale earlier. मतलब अभी जैसे सैमसन का भी प्रॉब्लम है. सैमसन को हमेशा ये लगता है कि he has to be the enforcer in RR का lineup. He has to score every ball. हर बॉल मुझे स्ट्राइक लेना है. That is not how you play an innings or build an innings, right? Even 120 balls is too big अगर आप देखो, and that is the maturity which Kohli had from a very long time. Now मतलब जब वो he gives to junior pros, then it comes to the forefront कि नहीं यार, here is a batsman who is willing to give a lesser known player more strike, but that aspect of his game has always been there. And what is more heartening, if I would like to continue about this win and this approach, is कि यार RCB has been doing un-RCB things. जैसे आज वो मतलब 43 से 4 से 170 तक गया, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो डर था कि यार इन लोगों ने शायद अभी लाइटली ले लिया है, गेम शायद हाथ से जाएगा. And then to come back and then to chase it the way they did, this is a sign of a very, very good team. Yeah, good team. Not to say a champion team. अब तक जीती नहीं है, of course. But this is a statement saying कि यार, we are not taking any game lightly. We are not complacent, and we are here to win every game. And that champion teams are a sort of are a thing of process. मतलब धीरे-धीरे you get these small things right in a team, and then you eventually put the pieces together, and then the champion team becomes a champion team here. Kohli, guys, 6,000 runs in the T20 format in the IPL. Yeah, the first guy to do that. Of course, it had to be the king. I have a great stat on this as well, yeah. Huh? So 6,000 first to reach is Virat. 1 to 5,000 कौन पहले पहुंचा पूछूं या just first पूछो? कौन 1,000 पे पहुंचा? रायना गया ना first to 5,000. रायना गया ना. One to first is. So 1 to 5 first 2,000 is Raina. First 3,000 is again Raina. First 4,000 is again Kohli comes back. Kohli is first 4,000. First 5,000. हाँ, 2016 exactly. फिर 2000 फिर again first 5,000 is Raina again. Raina again. So first 2,000, first 3,000, first 5,000 is Suresh Raina. First 4,000, first 6,000 is Virat Kohli. First 1,000. Shaun Marsh. 1,000. That's a good call. Yeah. Matthew That's a Hayden. great call. Matthew Hayden का Australian opening partner. Gilchrist. Gilly is the first to reach 1,000 runs. Yeah. Another one I have here is most runs as captain in IPL chases. Kohli is number 2. Yeah, he reached 2,000 today. He scored 2,000 runs as captain in IPL chases. Captain and IPL chases. Yeah, captain and IPL chases. 2,000. Yeah, he reached 2,000 and he's at second place. He's at second place. Someone Dhoni has to be Gambhir. Dhoni. It has to be Dhoni. Dhoni, right? Gotti. Okay. Gotti is number 1 with 2,165 runs, and he's surprisingly played less games than Kohli, like 12 less games than Kohli. So yeah, I mean, we remember, man, Gotti was mad at chasing. You remember? Yeah. When Uthappa and Gautam Gambhir used to get going, they used to chase. Yeah. उसके नीचे third पे धोनी है. You guys were right about it. I mean that कि ये तीनों के बीच में है. Fourth पे Warner है. ये भी बनता है यार. I mean, but he's a lot behind these guys. So Kohli is 2,000 runs. Dhoni is 1,816 runs. Warner is 1,287 runs, and Rohit is 1,272 runs at number 5. 1,200. 1,200. Okay. 1,200 runs. Yeah. रोहित ज्यादा करके बैट फर्स्ट वाले ही कैप्टन्स हैं. मतलब most of the runs batting first kind of इसमें आया है. Can understand. So moving on to the star player of the game, the star of the future, DP, Devdutt Padikkal. DP. Yes, the newly signed Puma athlete. 101 of 52 with a strike rate of 194.23, 11 fours and 6 sixes. Just destroyed the Rajasthan bowling today, right? Destroyed. Oh, no, actually not destroyed. I mean, it's more like caressed them. Easy peasy. Yeah. क्या है?
इधर उधर 6 व्हाट शशांक एक चीज थी मतलब चांसलेस था भाई, चांसलेस था, एग्जैक्टली चांसलेस था। उसका जो एक शॉट था शायद 90s के आसपास, वो एक एज लग के थर्ड मैन के ऊपर गया, अदरवाइज दैट गाय प्लेड लाइक क्लीन। एक उसका एज नहीं था, एक सिक्स भी ऐसा नहीं था कि बस बाउंड्री के आसपास गिर रहा है। कब एक तो एटलीस्ट गैप कवर कर रहा है, अदरवाइज इज टॉन्किंग इट लाइक लॉन्ग वे। आई मीन व्हाट अ क्लास प्लेयर, व्हाट अ, और वो जो फ्लिक्स यार, वो फ्लिक्स जब मार रहा है भाई, क्लास प्लेयर। और हाइट भाई, उसकी हाइट का एडवांटेज पूरा यूज करता है, सारे क्लीन शॉट्स और बैलेंस ऑफ दो शॉट्स यार, द टेक्निक, मतलब इट्स जस्ट अमेजिंग हाउ ही कैन प्ले। मतलब यार धीरे धीरे अब नो विजय हजारे में भी उसने तोड़ किया क्या, 760 समथिंग रन मारे, 700 727 या समथिंग, या एग्जैक्टली, पृथ्वी के बस ज्यादा थे उससे, बट ही वाज ग्रेट इन दैट एज वेल। इवन सैयद मुश्ताक में he didn't play all the games, he played 6 games I think, but उसमें भी he was what 10 or 11th in the rank, but again he's so young, and and we spoke about this because when we were sort of doing this, the predictions, you'll find it here. Here. I'll link the card over here. You can go see it. So we were talking about this and we were saying कि this can be a potential problem for RCB कि दोनों थोड़ा धीरे खेलते हैं. Kohli also likes to anchor, and DDP, and I said DDP has enough class, and Kohli will tell him to go out there and express himself this year. He's a year older. He knows his batting much more. He's scored in the domestic cricket, perfectly in form. I think this is how he's going to play this season now. Yeah. Guys agree? Absolutely. Actually, जैसे आपने बोला, I was one of the naysayers. मतलब I was bit apprehensive about young Indian people या फिर whoever for that matter जिनके लिए भी first season great होता है. They normally get found out in season 2 and generally season 3 में जब वो come back करते हैं, then we know the person's character. But for Padikkal to come and display the kind of performance in the very first game effectively, क्योंकि मतलब चेन्नई के विकेट में he मतलब he did what he was expected to do, but यहाँ पे to put on a show and silence missed all out the first game also, मतलब उसकी वजह से because of COVID and all, coming back is a little bit time लगता है थोड़ा सा. Absolutely wonderful. बहुत मजा. We are bit impatient as well, no? 2 innings और हम बात करने शुरू कर देते हैं. So I think not you, but I'm saying the overall talk about DDP. Last season में after the power play I found him to जब मतलब field खुल जाती है, then he struggled a bit to find the wickets to explode. But here he was another. It was clean, यार. It was clean again. Vignesh जो तू उस दिन बोल रहा था about Dhawan, all percentage shots. Again, all percentage shots, right? Exactly. I mean, एक sweep था मेरे को जिसमें लगा that was probably not percentage, उसने उठाया था and hit him for 6. Right. It's, I mean, if you get a little bit of an invariant bounce, so you can top edge it very easily. But overall, fantastic year. 1, 2, 3 again, 6th guy to score a century against IPL against Rajasthan Royals in the IPL. The other ones are century. 6th. It was a bit tussle between, not tussle, but I was like. आखिरी में विराट ने नहीं यार दिया है. नहीं, ऑब्वियसली विराट तो देना ही था. विराट का मतलब समझ में आ रहा था कि सिंगल विंगल ढूंढ रहा है भाई. विराट क्या खुश हो रहा था उसकी बैटिंग देख के ऑन द पिच. विराट वाज सो हैप्पी भाई, वाज मेकिंग मी डबल हैप्पी उसमें. मतलब कि मतलब वो उसको मार रहा है हेलमेट पे, और मतलब पूरा वो ब्यूटी ऑफ बैटिंग विद कोहली यार. That is the nice part of batting with Kohli. और कोहली को छक्के मार के नॉर्मली खड़ा है और कोहली एक्साइट हो रहा है. We have seen this with Surya, we have seen this with Ishan, even for say Ishan के साथ भी भाई क्या पागल हो रहा था दूसरे एंड पे. Crazy. Also with Rohit as well. Rohit के साथ तो इतने साल खेला है, फिर भी that guy is on different trip when he's on the. अभी वो ट्रिप पे वो अभी कंटेंट है अपनी लाइफ के साथ, वो बस एंजॉय कर रहा है भाई अभी. He's just enjoying other people's success. He's so confident about himself कि उसको कुछ वो नहीं है. He's just enjoying other people's success, motivating them. What a leader is basically here. He's a leader here. So simple as that. Yeah, guys, I have one about, since we are talking about centuries, I have like number of centuries for team in IPL. Okay, first is 14, then 13, then 10. Guess these 1, 2, 3. 14 तो RCB रहेगा. RCB is okay क्योंकि विराट ने 5 मार रखे हैं.
गेल ने और कुछ मार, एबीडी ने कुछ मार रखे होंगे. So 14 is RCB. Second and third. Second must be CSK. No. पंजाब है क्या? Yeah. So the thing is, जो पहले 3 है 14, 13 और 10 तीनों ने ट्रॉफी नहीं जीती है. तो 14 is RCB, 13 is Punjab and 10 is Delhi. And दो तो लास्ट ईयर ही थी दिल्ली की. एक सहवाग की हो गई, याद है तो मुझे. दोनों धवन लास्ट ईयर दोनों धवन नहीं मार दी ना इनके लिए. तो मुझे ये बताइए कि सिर्फ एक सेंचुरी, मतलब एक टीम है जिसके जिस टीम से एक ही सेंचुरी आई है. मुंबई इंडियंस. मुंबई इंडियंस नहीं यार, मुंबई तेंदुलकर, जयसूर्या, तेंदुलकर ने मारी है ना. सनराइजर्स एक ही सेंचुरी. वार्नर है क्या? सिर्फ एक. ये वो सब बीच में जो आई थी फ्रेंचाइजीज, उनमें से तो कोई नहीं है ना. गुजरात लायंस, नहीं, कोची टस्कर्स और पुणे. proper team who has won the trophies as well. KKR. KKR. Yeah, KKR होगी भाई. And imagine again. No, you KKR I can imagine. ओपनर. Yeah, क्योंकि KKR के पिच याद है जब ये लोग जीते थे. किसी ने सेंचुरी नहीं मारी. आईपीएल ओपनर ने ब्रैंडन मैकलम की जो सेंचुरी मारी है, उसके बाद में किसी ने सेंचुरी नहीं मारी अभी तक. वाह. स्टार्ट है क्योंकि देख, एक तो ये है कि 7 गेम होम पे खेलते हैं और केकेआर का विकेट जब गांगुली बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना था तब उसने फास्ट बॉलिंग के लिए कुछ किया था विकेट के लिए. बिफोर दैट लक्ष्मी रतन शुक्ला, these guys slow and low wickets, I mean difficult to get off. So I can understand that, but फिर भी 7 गेम अभी खेलते हैं यार. It's उल्टा रोहित शर्मा के केकेआर के खिलाफ कोलकाता में ज्यादा सेंचुरीज रहेंगे. ये स्टैट के कंपेयर. Okay, another one. Okay, most IPL wins by 10 wickets. RCB is number 1, bro. Like 4 times they've done it now. I'm just not surprised whenever it comes to extremes. हाँ, बैटिंग का कोई extremes का. Whenever it's extreme, it has to be most IPL. lost by 10 wickets देखेंगे तो हो सकता है RCB वहाँ पे भी आ जाए. First या second या third में. शायद आ जाए. Yeah. SRH is won twice by 10 wickets. MI and CSK again have both won by 10 wickets twice. Okay, highest opening run partnership for RCB it was today, 151. Kohli, Padikkal versus RR. Next are again Gale involved in both. Gale Dilshan 167 against Pune Warriors. Gale Kohli. Yeah, and Gale Kohli 147 against Punjab. Yeah, we saw that. ये अच्छा start है. Most 50 runs while chasing in the IPL. Most 50 runs while chasing. Most 50 plus scores while chasing in the IPL. Most 50 plus. This is Virat Kohli. It has to be Virat Kohli. विराट नहीं है, विराट थर्ड पे. अगेन चेसर की हमने पहले बात की थी. वाज अनदर ग्रेट चेसर. गौतम गंभीर इज नंबर 2. और उसके ऊपर भी डेविड वार्नर, विलियर्स. एक मिनट रुकना. गब्बर. गब्बर. By just call. I think such an underrated cricketer. The Sports Republic is signing a petition to call Gabbar great. Genuine great great. के list में डाल दो. At least IPL great तो है. हमने इतने stats निकाले and he's by far by most 50 scores while chasing in the IPL. Most 50 plus scores. Kohli is 18. Watson is 16. Rohit is 16. They've done it 16 times. Kohli has done it 18 times. Gambhir has done it 20 times. Dhawan is 27. My goodness. Yeah. Again, I have another one. 500 plus runs against most opponents in the IPL. समझे? Start. 500 plus runs मतलब किसी भी सारी franchises के against, मतलब कितनी franchises के against बनाए हैं. तो Kohli has made it 500 plus runs against 7 of the franchises. He's 7 of the franchises मतलब बचे कितने? अच्छा वो जो दो तीन आके. हाँ मतलब 2 बच्चे होंगे ना. 10 भी ले ले तू, अगर सब मिला के 10 भी ले ले तू, तो एक तो RCB हो गई उसमें से. हाँ, उसमें से एक RCB वही. हाँ, तो कंसिस्टेंटली तो उसने सबके साथ मारी दिया है. जो इस साल सेंचुरी उसके साथ सबके साथ मारी. 500 प्लस रन 7 फ्रेंचाइज के साथ आज उसने कंप्लीट किया है. RR was the 7th franchise. उसके पहले एक आदमी था. Any guesses who had already done 7? Six is De Villiers.
6 is Uthappa, and 6 is Raina as well. Again, 6 opponents. They've scored 500 plus. De Villiers, Uthappa, and Raina as well. One is joint with Kohli, who has done it 7 times. Is it again Gabbar or what? No. Gabbar? Oh. भाई गब्बर खुद ही 3-4 फ्रेंचाइजीज के साथ खेला है. गब्बर खुद मुंबई के लिए खेला है, दिल्ली के लिए खेला है, सनराइजर्स के लिए खेला है. बट गब्बर का ब्रेक थ्रू ईयर आया था 2012 में यार, जब डेक्कन चार्जर्स को कोई भाव नहीं देता था. He was in terrific form that year. Terrific form, yeah. Seriously. And again, another guy, Delhi Daredevils then let go. Another guy. Yeah. There are so many of these, is crazy. We can have a separate podcast on that list. How stupid Delhi have been actually in terms of Andre Russell, AB de Villiers, Warner. My God, yeah. Andre Russell, AB de Villiers, and this guy, man. It's over. Gautam Gambhir, yeah. Gautam Gambhir. Gambhir was very hurt by that. He was very hurt. And even Viru also, यार, वो जाके पंजाब के लिए अगले साल तो खेला था. He scored a century as well. And the next year he went to play for Punjab. So it's just, and they now drafted in Umesh Yadav for fucking, what's his name? Harshal Patel. I mean, sometimes it's just unbelievable, right? उमेश यादव को भी तो खिला भी नहीं रहे, सिर्फ MX टकाटक के ऐड पे दिख रहा है. हाँ वो उमेश यादव को तो उन्होंने ऑक्शन में खरीदा, हर्षल पटेल को उन्होंने कैश ओनली ट्रेड किया. हर्षल एंड सैम्स को किया था, बट अगेन इट्स अ ट्रेड ऑफ ना, मतलब कि आप एक फ्रेंचाइजी से उधर ले रहे हो एंड यू बेसिकली मेकिंग अनदर फ्रेंचाइज स्ट्रॉन्गर आल्सो ना, कि अगर अपनी फ्रेंचाइज को तो आप बर्बाद कर ही रहे हो एंड यू आर अगेन मेकिंग समवन एल्स स्ट्रॉन्गर. सो इट्स जस्ट अ डबल. ने वो अच्छा किया कि उनके 3 हीरे देके एक गब्बर को लिया. विजय शंकर, अभिषेक शर्मा. I swear वो तो बहुत अच्छा था यार. वो that is the only thing that was good. अभी तो खैर it's a good team यार. अभी I hope they don't try all these shenanigans with Pant and Iyer और ये सब के साथ ना करें बस ये. But this is not a Delhi Capitals podcast. This is a celebrity podcast for RCB, because we have 2 very happy RCB fans today sitting. Yeah, so great victory, guys. Congratulations. Of course, 10-wicket victory is a big victory, man. It's just, only one team was Royal today, and it was Royal Challengers Bangalore, not Rajasthan Royals. Yeah, the other team was shit. Cool, guys. Great podcast. May it continue until you face Delhi. See you tomorrow. Yeah. And everybody's watching. Please like, share, comment, subscribe, bro. I don't do all these things. Please do that if you like this. Thank you.